को हमरो नॉमिनेटेड मेंबर मान को स्टेट रू केते जण हमरो जिबे राज्य सभा को एलोकेशन ऑफ द सीट टू राज्य सभा को बेस्ते आयरलैंड आयरलैंड साउथ आयरलैंड साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका ओके तो साउथ अफ्रीका तेनो एडा मन रख Which of the following article of Indian Constitution are not related to each other? 12 and 36, 13 and 168, 12 and 32, 141 and 214. हाँ? कोड़ा हमरो related है 12 और 36 तो हमरो केमती ना दीटा को डेफिनेशन ऑफ स्टेट ओके डेफिनेशन ऑफ स्टेट हो जी 12 कोन ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 भी हमर डेफिनेशन ऑफ स्टेट 13 and 168 368 जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी रिव्यू आउडे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि करूच ताहले जुडिशियल रिव्यू हबो वेदर एटा राइट की रॉन्ग ओके 22 और 32 22 हमर कोन राइट अगेंस्ट अरेस्ट जदि तमे इलीगली अरेस्ट हो ताल 32 रे जाई परिबो 141 and 214 कोन 141 सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड हमरो ओके एंड दीटा देखा हमरो ओके गोटेला सुप्रीम कोर्ट आउडे हाई कोर्ट ओके so all are related to each other so D is हमरो correct answer which of the following statement are correct in respect to lame duck politician माने कोन हाँ having lost a re-election bid, choosing not to seek another term after expiration of his or term, no term limit running for a particular office again, abolition of office after his or her official term. तीनटा भूल अछि आउ सबुडा लेम डक माने कोन ना तमे जदी आउ थरे ठिया छ हारि जाय छ ओडे री-इलेक्शन जदी तमे हारि जाउ छ so choosing not to किमा डरी की तमे ठिया हो मु हारि जीवी काले डरी की ठिया हो न so choosing not to seek another term after expiration his term तर तमर 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्ण हे गेला तमे नेक्स्ट इलेक्शन लढिलनी और लढिलो हारि गलो ओके तो एडा हमरा abolition of office his her office after the term so आंसर कोन हबो 1 to 4 हमरा करेक्ट आंसर आउड हमर क्वेश्चन पडितला 2022 रे जे which of the following statement are correct in respect to the basic structure of the Indian Constitution. Koda basic structure of Indian. It is a form of judicial review. It is used to test the legality of any legislation by the court. Okay. The doctrine of basic structure gave free hand to the Parliament to amend any part of the Constitution. Okay. तीन टा तो तमरा कोन होची भूल अछि जे पार्लियामेंट कोन हबनी हां तीन हबनी काहे कि ना बेसिक स्ट्रक्चर जो गुडा को पार्लियामेंट कोन से गुडा को फ्री हैंड नाही सिथिरे लिमिटेड एक्सेस अछि डिलीट करि परिबनी बेसिक स्ट्रक्चर जो गुडा हम जेमति कहितले इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हमर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी टा हमर बेसिक स्ट्रक्चर सेथि पाई एनजेसी को जेतले गोटे एक्ट हमर आना गला ताको नॉल एंड भॉइड कर देले सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी रूल ऑफ लॉ हमें कहले सेक्युलरिज्म हमर सोवरेनिटी ए वर्ड गुडा का हमर बेसिक स्ट्रक्चर जो गुडा का हमें डिलीट करि परिबे तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव फ्री हैंड हो तो नॉट गेव फ्री हैंड तो रेस्ट्रिक्शन कर दी पार्लियामेंट को टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट करि परिबो किंतु जोडा बेसिक स्ट्रक्चर से गुडा का हैम्पर करिवनी से गुडा का डिलीट करि परिबनी ओके सो 3 टा हमर भूल तेनु तमे 3 टा काटि दबो जदी तो डेफिनेटली हमर कोन होजी 1 टा तो डेफिनेटली ठीक 4 का कोन पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर कोडी डिफाइन है अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर टा हमर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोडी डिफाइन हेनी तो ए बेसिक स्ट्रक्चर टा हमर केशवानंद भारती केस रे ऑटोमेटिक आसिला आउ एटा ओडे जुडिशियल हमें कहिबा जे डिस्कवरी बोली हमें कहिबा एंड तापरे आउ से माने को गुडा भी बेसिक स्ट्रक्चर रहिबो सेउडा का फिक्स नाही माने डे बाय डे जदी सुप्रीम कोर्ट ओडे डिसाइड करूची जे राइट टू मैरी ओडे बेसिक स्ट्रक्चर
सपोज हमर कुआगला फंडामेंटल राइट रे आसुची तो सेटा गोटे बेसिक स्ट्रक्चर कि राइट टू एनवायरनमेंट धर आबे कहबा तो जो जोडा हमर नुवा नुवा जिंस डे बाय डे रिक्वायरमेंट अनुसार हमर सुप्रीम कोर्ट जोडा डिसाइड करबा कोडा बेसिक स्ट्रक्चर सेडा का हम करि परिबो ओके सो आंसर हमर कोन ना 4 टा रॉन्ग अछि देन 3 टा रॉन्ग अछि तो आंसर 1 एंड 2 हेजबा करेक्ट आंसर ओके देखो एटा गोटे होची जो को शेड्यूल ले कोन अछि कोडा स्टेट लिस्ट रे अछि कोडा कनकरेंट लिस्ट रे अछि कोडा यूनियन लिस्ट रे अछि सबु वर्ष गोटे क्वेश्चन पढिबो ही पढिबो कोन पढिबो तन ताकू भलसे गोटे थरा पढि देथिबो ओके एंड निहाती गोटे क्वेश्चन पढुची आ तमर जो टेबल जो लिस्ट जे कोटू को कॉन्स्टिट्यूशन तार आमे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट आसीसी डेफिनेटली ए दीटा क्वेश्चन तो पक्का सबु वर्ष पढिबो ही पढिबो से दीटा टेबल किबा शेड्यूल जोडा हम प्रथम चैप्टर जोडा रहउची जे को पार्ट रे कोन अछि को शेड्यूल रे कोन अछि कोठू कॉन्स्टिट्यूशन कोन आनिचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो से दीटा का चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेनु ताकू भल से तमे पढि दबे ओके सो एटा हमर एंट्री एबे कुहा गला ना 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एंट्री 5 लिस्ट 2 डा मते कोन कहला तो स्टेट लिस्ट रो 5 नंबर एंट्री कोन तुमको ये स्टेट लिस्ट पचारिनी लिस्ट 2 पचारिची पुनी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कोन अछि तमे कहबो तो से लेवल आगर पड़ला तमरे कोन पंचायत राज ता को लिस्ट अछि कि हमरा पब्लिक ऑर्डर ता को लिस्ट अछि तो एई अनुसार हमरा कोन ना एबे पचारिची जे तमरा उल्टा बुलेई पचारिची लिस्ट 2 रो एंट्री नंबर 5 तेनु प्रथम रु 15 टा जो अछि घोषी पकेबो स्टेट लिस्ट हैला यूनियन लिस्ट हैला कनकरेंट लिस्ट हैला प्रथम रु 10 टा जो अछि घोषी की रखिबो ओके तो एमिति बेसी नै आउ कोन की कहबो कि 40 नंबर रे कोन अछि आ सेमिति पचले आउ केही मन रख परिबेनी जार मन अछि भलो कथा से रखिबो 2 मार्क रखिबो आ केते घोषिबो 97 टा अछि 97 टा को घोषी की मन रखिबो ओके ता प्रथम रु 10 टा 15 टा पूरा मन रखिदिबो ओके तार भीतर मेजर पड़े तो एई दिरा हमर कोन ना 5 नंबर एंट्री टा होची लोकल गवर्नमेंट ओके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो लोकल गवर्नमेंट तो सेटा हमर रहउची ओके सो डी हिजबा हमर करेक्ट आंसर which of the following statement are correct in respect to the article 243 of the Indian Constitution article 243 टा कोन हमर थिला पंचायत राज हमें कहले 243 रु 243 ओ होची हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तो ता भीतर से पचारिची जे सी रे कोन अछि डी रे कोन अछि आई रे कोन अछि जे रे कोन अछि ता आगुर पचारथिला कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन केत नंबर आर्टिकल केत नंबर 243 एबे पचारछि तार आर्टिकल गुडा का कोन माने ए कोन बी कोन सी कोन डी कोन ई तेनु एबे माने क्वेश्चन एई भलिया करले डिफिकल्ट आ सेत पे इथरे 48 मार्क माने जाइथिला कट जनरल कट 48 एई भलिया क्वेश्चन पड़ले करबा डिफिकल्ट हे जबो कि सब आर्टिकल गुडा पढिथिबो कि तेनु आर आंसर होची सी मन रखिबो 1 एंड 2 डीटा का ठीक अछि तो सी कोन ना प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन of the chairperson of the panchayat at village level in panchayat at district level village level in panchayat तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेयरमैन कर जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है हमें कहले हमर जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मेंबर माने अछंती तो तांकर इलेक्शन केमिति हुए डायरेक्ट इलेक्शन किंतु चेयरमैन जो इलेक्शन हुए केमिति हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन ब्लॉक रे जे चेयरमैन रहिबे तांकर केमिति इलेक्शन हो ब्लॉक रे जो माने समिति सभ्य जाईथिबे गोटे ब्लॉक रे जण 15 जण समिति सभ्य तो से माने तांको भितर जण को चेयरमैन हमरो बाछिबे सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट रे तर हमें जो जिला परिषद अछन से माने तांको भितर जण चेयरमैन बाछिबे सो चेयरमैन आर इनडायरेक्टली माने इलेक्टेड एंड जो मेंबर माने डायरेक्टली हमर इलेक्टेड हमें ऑलरेडी एटा डिस्कशन करथिले डी रे कोन अछि ना प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन टू द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन इन द पंचायत और विलेज लेवल ओके and representation of seats ओके हां रिजर्वेशन हमें कहले 33% रिजर्वेशन रहउची वुमेन माने को पंचायत राज एटा भी तांकर कंपलसरी प्रोविजन में आसुची आईडा कोन 243 आई इज रिलेटेड टू कोन हां finance commission स्टेट फाइनेंस कमीशन ओके एटा हमर कोन स्टेट फाइनेंस कमीशन ओके एंड 243 जे टा कोन audit of accounts
ऑडिट ऑडिट ऑफ अकाउंट लोकल फंड ऑडिटर जो ऑडिट ऑफ अकाउंट पंचायत राज ए सब गुडा करम ऑडिट ओके तेनु ए भलिया क्वेश्चन हमर पडुची तो देखो सब क्वेश्चन जो जोडा पढी सारिलानी ता छडा आ कोन पढी परिबे से खोजु तेनु तमे जदी देखिबो पंचायत राज आमे कहिले कोन कोन क्वेश्चन आमे पढिथिले ऑलरेडी डिस्कशन करिथिले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आमे कहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कथा कहिथिले केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रसला 73rd अमेंडमेंट एक्ट रसला केबे असला 1992 रे कहा समय रे पीडी नरसिंह राव को समय रे हमर असला ओके एंड हमर पंचायत राज डे केबे 24 अप्रैल एटा भी मन रखि दाओ 24 अप्रैल पंचायत राज डे हमर रहउची एंड ए पंचायत राज हमर केते नंबर पार्ट रहला पार्ट 9 शेड्यूल 11 ओके केतेटा फंक्शनल आइटम एथि अछि हमर 29 टा फंक्शनल आइटम 29 टा फंक्शनल आइटम अछि ओके एंड एथि हमें डिस्कशन कले जे टीटार गवर्नमेंट रहउची मिडिल ले कोन रहउची पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल ग्राम पंचायत आ जिला परिषद हमर टॉप और बॉटम पे रहला तापरे हमर ग्राम सभा कथा कहले ग्राम सभा रे के रहउची को माने ग्राम सभा रे भाग नै परिबे ना ओनली द people who name are in the voter list और पर्टिकुलर से ग्राम पंचायत को हमरा बिलोंग करथिबे अच्छा ए जो हमें कहले स्टेट फाइनेंस कमीशन अंकर अपॉइंटमेंट किए करंती गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर ऑफ द स्टेट करंती एंड केते जन ई स्टेट फाइनेंस कमीशन में थांती 5 जन मेंबर ओके अच्छा एमान को रिमूव केमती करा जो हां प्रेसिडेंट रिमूव करिवे स्पेशल मेजॉरिटीज हां किछि मेंशन नहीं ओके मेंशन नहीं तेनो अंका ऊपर किछि मेंशन नहीं हेले स्टेट अंकर इलेक्शन की करूची पंचायत राज स्टेट इलेक्शन कमीशन हमर स्टेट इलेक्शन कमीशन ओके स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट की करची गवर्नर करचंती एंड रिमूवल की करचंती ना प्रेसिडेंट करचंती ओके प्रेसिडेंट करचंती एंड अंकर कार्यकाल केते पंचायत राज रो मेंबर मानकर 5 इयर्स हम कहिथिले एंड मिनिमम एज केते पंचायत राज मेंबर होती 21 वर्ष 21 इयर्स होचे हमर मिनिमम एज ओके तनु आ ऊपरे तमरो आ गुडे पडितला पेशा एक्ट केबे आसिला 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू सिविल एरिया 1996 रे आसिला पेशा एक्ट केतटा स्टेट को हमरा बिलोंग करची माने एप्लीकेबल 10 ओडिशा अछि ना नै 10 स्टेट ओडिशा यस सर तेनु आ छडा जहा जहा ता भितरे अछि सेडा को पडिबो देंदी जदी पडिबो जे जो 29 टा जो हमर अछि तार ऑब्जेक्टिव माने कोडा आसीबो ता भितर 3-4 टा देइबो पचार दिबो कोडा नुहे अच्छा जो 29 टा फंक्शनल आइटम अछि कोन कोन अछि गोटे दिटा त मन रखछो कोन कहले रूरल हाट जो हमर हाट से टैक्स कोड आनछंदी तो गां रे गोटे हाट बसुची तो हाट को प्रति वर्ष जे नौची से जाई सब चालान काटुछ ना नै सब माने परिवा व्यापारी कठू हाट हला मेला हला पोखरी हला ओके रूरल रोड हला तो ई सब गुडा को ता अंडर 29 टा फंक्शनल आइटम भी गोथरा पढी दबो कारण पंचायत राज रु दीटा क्वेश्चन सब वर्ष पढिबा हय आउ सिलेबस रे पर्टिकुलरली लिखा है पंचायत लोकल गवर्नमेंट लिखा है ता ऊपर पढिबो कोन पढिबो सेरा जेमति आर्टिकल पढिथिला पढी दबो 243 रु 243 हो जाए जहा जहा आर्टिकल अछि आरथर पढिथिला सी डी आई जे आउ चारिटा छाडी के पुनी बकेबो ओके पढिबो किंतु आ जदी क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी जदी पढिबो ताहाले तुमको माने ता ऊपर थरोली पढिबो ए सब गुडा तो जानि छ जनरल कथा जोडा के तमे जानि छ एबे कोन जानि न सेटा पढो आ पढिबो सेटा ही पढिबो कारण 2022 रु परठु क्वेश्चन लेवल हमें धीरे धीरे डिफिकल्टीज हमें देखुचे तेणु से लेवल तुम जिते पढ़ुच थरोली पढ़ से चैप्टर तुम लिखिच पंचायत राज 3टा 2टा कि 4टा क्वेश्चन जहा ले भी पढ़िबो ओके so each of the following are correct in respect to the election commission आ ए वर्षर सियोर शॉर्ट क्वेश्चन होची इलेक्शन कमिशन एते वर्ष जाक ता ऊपर न्यूज रे अछि एसआईआर को नै कि हो इलेक्शन को नै कि हो
तो एटा गोटे तो डेफिनेटली क्वेश्चन इलेक्शन कमिशन पंचायत राज ए सब क्वेश्चन मैंडेटरी जो कहू 20-22 क्वेश्चन कौन पड़िबो इलेक्शन कमिशन ए वर्ष गोटे क्वेश्चन हुआ कि हमर पंचायत राज रु दीटा क्वेश्चन डेफिनेटली पड़िबो कौन पड़िबो जणा ओके तो पड़िबो किंतु डेफिनेटली so which of the following statement are correct in respect to the election commission of India? It is an autonomous legal body. So part 15 of the Indian constitution deals with the election and the election commission. The election commission was established on 15 January 1950. The article 328 provides bar on the interference of the court in election matter. कौन हबो so एटा हमर कोन ना हमर आंसर हे जाउची 213 फर्स्ट होची एटा कोन ना इट इज एन ऑटोनोमस लीगल बॉडी ना Constitutional body. तो एटा हमर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया छी जे constitutional body not legal body एटा होची हमर कोन constitutional body ओके सेकंड होची ठीक अछि पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन एंड इलेक्शन कमिशन तो एटा हमें कहले प्रथम होची कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये कौन करूची ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करिवो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करिवो केते नंबर आर्टिकल हमरो इलेक्शन कमिशन अछि 324 रे हमरा इलेक्शन कमिशन अछि इलेक्शन कमिशन काहार इलेक्शन करूची प्रेसिडेंट कर इलेक्शन करछि ना नहीं वाइस प्रेसिडेंट एमपी मानकर करछि ना नहीं माने लोकसभा राज्यसभा एमएलए मानकर करछि ना नहीं ओके तो ए मानकर हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्शन हमर करछि तो हमारा इलेक्शन कमिशन में केते जण मेंबर अछि टोटल 3 जण मेंबर अछि 3 मेंबर बॉडी तो जण चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरो 2 जण अदर इलेक्शन कमिश्नर ओके तो ए जो आगुरु हमरा कोन थिला ना जणे इलेक्शन कमिश्नर थिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर किंतु हमरा नंबर एटा बढ़े दिया गला केबे बढ़े दिया गला 1989 89 ने बढ़े दिया गला 89 ने एमती कोन हला जे बढ़े दिया गला ना नंबर ऑफ वोटर हमरा बढ़े दिया गला एज ता वोटिंग एज ता हमरा 21 रु हमरा 18 वर्ष जो हमें कहू जे वोटिंग एज ता 21 वर्ष थिला 18 वर्ष हमर करा गला एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे करा 61st. हां 61 ओके 61 अमेंडमेंट एक्ट ओके 1989 रे कहा समय रे राजीव गांधी का समय रे ओके सो राजीव गांधी का समय रे एटा हमर कोन ना तमरा रिड्यूस कराइतला सेति में जो नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ी गले तो तांको हैंडल करिया पय हमरा जणे रु 3 जण हमरा तो एमानकर इलेक्शन के जो एमानकर अपॉइंटमेंट के करूची प्रेसिडेंट करूछंती राज्यपाल हमर परीक्षा रे पडितला केते 6 और 65 ओके इलेक्शन कमिशन को हमर बाहर करिया कहले कोन कंडीशन लाइक केमिदी हमर बाहर करिया जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट Chief Election Commission को जज है सुप्रीम कोर्ट ओके नॉट इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जदि मु पचाइ थांती तमे कहि थांत लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम अदर इलेक्शन कमिशन को केंदी बाहर करा जाए समर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन तेनु तमे पचरा जाय छि कोन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोन आ तांकू ए क्वेश्चन भी ए वर्ष इंपोर्टेंट कारण अपोजिशन तांकू इंपीचमेंट करिया पय हमरा कहउछली चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को नारे इंपीचमेंट मोशन आनिया कथा उठुची तो तांकू बाहर करिया कहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोन ना लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज को बाहर करिया कहले कंडीशन कोन ना प्रूव्ड मिसबिहेवियर आउ इनकैपेसिटी ओके एंड अदर सिलेक्शन कमिश्नर को हम बाहर करिया पई चीफ इलेक्शन कमिशन का रिकमेंडेशन हम करि परियो अच्छा ए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो हमरा होउची तो सेहिथिरे की रहउची सिलेक्शन कमिटी रे की रहउछन की रहउछन प्राइम मिनिस्टर एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आउ किए लॉ मिनिस्टर होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर हमर थिले होम मिनिस्टर ओके हां कैबिनेट मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर हमर थिले किंतु एटा एक्चुअली हबा कथा कोन ना पीएम हबा कथा आउ कोन ना एलओपी हबा कथा लीडर ऑफ अपोजिशन आउ सीजे हबा तो एटा को से माने कहउछन जे वायोलेशन करूछन काहे कि ना यदि सीजे हेबे ताहाले इलेक्शन एमाने जहा को चाहउछन मे भी हेई पारे न हेई पारे कारण सीजीआई न्यूट्रल लोक रहउछन किंतु एथिरे कोन हला ना मेजॉरिटी हमर दरकार तो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गोटे पटे रहि गेल आराम से जहा को चाहि आनी परिबे तो माने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर इलेक्शन को नेकी भी कंट्रोल होछि हमरो
माने सिलेक्शन कमिटी मेंबर को नेकी होची इलेक्शन कमिशन वाज एस्टैब्लिश हमरो एटा हमरो ठीक अछि ओके जनवरी 25 1950 आर्टिकल 328 प्रोवाइड सेटा केते नंबर आर्टिकल 329 329 okay 329 okay so amara pota wrong achi which of the following committee has recommended for creation of न्याय पंचायत at village देखो ए सब क्वेश्चन तमर पंचायत राज रजिस्ट्रेशन एबे जो क्वेश्चन उडा पढुची माने भितरु जोडा तम भाबी नथियो पडियो बोले से को कमिटी हमर परीक्षा रे पढुची जे को कमिटी हमर प्रथमे रिकमेंडेशन करिथिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दबा पई हमर पंचायत बलबन नहीं बलवंत राय मेहता नहीं तो अशोक मेहता न्याय पंचायत कथा में अशोक मेहता कमिटी कहिछि अशोक मेहता कमिटी को उठी भल से पढ़दो कारण ता ऊपर हमर क्वेश्चन हमर पढुछि एई अशोक मेहता कमिटी को गवर्नमेंट नै के आसीथिला मोराजी देसाई का जनता गवर्नमेंट ओके बाय मोराजी देसाई किंतु ये रिपोर्ट दिला बेले को गवर्नमेंट चेंज होइছে ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी दिला बेले को पुणी इंदिरा गांधी पळे आसिला इंदिरा गांधी तांको रिपोर्ट ही चिरिक फोपाड़ देले आ कोन सी जिंस अडॉप्टेड कलेन सो अशोक मेहता कमिटी एटा भी मन रखिता फास्ट ये रिकमेंड करितला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ओके हमर कोन ना पंचायत को दबा पई एटा ही परीक्षा रे पढितला तमे पढी देबो लक्ष्मीकांत रो सेटा 14 नंबर पॉइंट रे लिखा है जे पूरा जे अशोक मेहता कमिटी एटा हमर रिकमेंडेशन देतिला ओके तापरे 61 which of the following statement are correct in respect to attorney general of india attorney general को नेकी को कौन हमरा करे attorney general is a part of indian judiciary attorney general of india is appointed by president on advice of the chief justice the term of attorney general of india is not fixed by the constitution attorney general has the right to take part in the proceeding of both houses of the parliament तो हमरा कोडा हमरा आंसर ठीक अछि 3-4 कोंडा 3-4 3-4 3-4 okay correct answer होची 3-4 the मने रखो attorney general is not a part of indian judiciary attorney general को हमें कोन कहूचे highest law officer of the country ये गवर्नमेंट रा लॉयर okay highest law officer of the country okay तो हमर कितना नंबर आर्टिकल ये रहउ छथि 76 okay तांको अपॉइंटमेंट के दउ छथि प्रेसिडेंट दउ प्रेसिडेंट जणे हमर अटॉर्नी जनरल हबा पई कोन क्वालिफिकेशन दरकार हमर ही शुड बी क्वालिफाइड टू ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रा जज हबा पई जहा क्वालिफिकेशन दरकार तो सेटा सुप्रीम कोर्ट रा जज हबा पई कोन क्वालिफिकेशन दरकार ना तमर इंडियन हेथिबो माने सिटीजन ऑफ इंडिया हेथिबो 5 इयर्स एज हाई कोर्ट जज और 10 इयर्स एडवोकेट हेथिबो हाई कोर्ट रे advocate हेतिबो हाई कोर्ट रो एमिनेंट जूरिस्ट हेतिबो ओके इन द आइज ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट हेतिबो तो एति के हेले तमे कोन होचो ना सुप्रीम कोर्ट रो जज हबा पई क्वालिफाइड तो एंकर टेन्योर केते एंकर हां नॉट मेंशन 5 वर्ष जनरली गवर्नमेंट थिला से माने रुहंदी किंतु गवर्नमेंट भांगला पर हमरो ये करि परिबे तापरे अटॉर्नी जनरल हैज द right to take part in the proceeding of the house he can be a member of any committee he peribe TI की discussion debate रे भाग नै परिबे only एमानकर कोन नाही no voting right अंकर कोन नाही voting right नाही तो एटा मन रखिबो एटाई परीक्षा रे पडुतला voting right नाही ओके सो आंसर कोन हे गला ताले 3 और 4 हे गला हमरा करेक्ट आंसर अच्छा एडवोकेट जनरल हमरा अटॉर्नी जनरल की अछन मते नाम डाकली कहली आर वेंकट रमणी ना की अछन हां ओके सो मने रखिबो आर वेंकट रमणी हमरा अछंती अटॉर्नी जनरल एंड अटॉर्नी जनरल जो हमरा सिमिलरली हमरा ओडिसा रे एडवोकेट जनरल कितना नंबर आर्टिकल 165 ओके 165 होची एडवोकेट सी जेमती हमर सेंटर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ये होछन हमर स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अंको अपॉइंटमेंट के देबे गवर्नर देबे ओके गवर्नर देबे तो ये तांकर क्वालिफिकेशन कोन थिया जने हमर अटॉर्नी जनरल हबा पई
he should be qualified कौन होगा का दरकार qualified for a judge of high court हाई कोर्ट रा जज होबा पई जहा क्वालिफिकेशन दरकार तांकर हाई कोर्ट रा जज होबा पई कोन क्वालिफिकेशन दरकार से 10 वर्ष 10 इयर्स एडवोकेट हिसाब रे और 10 इयर्स कौन सी जुडिशियल ऑफिस हैंडल करथिबे जुडिशियल ऑफिस हैंडल करथिबे ओके सिमिलरली ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द विधान सभा किंतु वोटिंग राइट विदाउट वोटिंग राइट तांकर नै अच्छा ए जो एडवोकेट जनरल हमर ओडिसा रे की अछि नेबे पीताम्बर आचार्य ओके मन रखिबो ता नाटा मन रखितो एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य सर से जो व्हिच कमिटी देइथिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत रे एलएम सिंह भी कमिटी हबो ना सर कोडा ओ कमिटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देइथिला पंचायत रे सिस्टम को एलएम सिंह भी कमिटी हबो पंचायत जी फास्ट की कहिथिले फास्ट कोडा अच्छा अच्छा फास्ट किए कहिथिले ओके फास्ट हमर अशोक मेहता कमिटी तमे लक्ष्मीकांत देखो अशोक मेहता कमिटी 14 नंबर पॉइंट लिखा है ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट कोडा हमर करेक्ट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री जो बिल इंट्रोड्यूस इफ ए गवर्नमेंट बिल इज रिजेक्टेड बाय द हाउस इन द पार्लियामेंट amounts to the vote of confidence in the government तापरे गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन द हाउस नेसेसिटेड 15 days notice the taxation laws amendment bill 2021 comes under the category of the money bill the central university bill 2021 comes under ordinary bill okay so हमर आंसर कोन हबो ना 3 and 4 हे जबो तो जदी हमर गवर्नमेंट बिल ता रिजेक्टेड हैला हमर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुए ना नो कॉन्फिडेंस मोशन आसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कारण ओटे गवर्नमेंट बिल ता तला आसीबो ता माने तमर सिंपल मेजॉरिटी नाही बोली ऑर्डिनरी बिल ता तम पास करि पैलनी तमर धर लोकसभा रे फेल हे जो लोकसभा रे सपोज फेल हे गला दैट मींस तमर सिंपल मेजॉरिटी नाही माने तमर नो कॉन्फिडेंस मोशन आसीबो नो कॉन्फिडेंस मोशन ता हमर कोठी इंट्रोड्यूस हे लोकसभा ओके लोकसभा रा हमर अप्रूवल दरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन रो ओके सो हमर नेक्स्ट ला द गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन द हाउस नेसेसिट ए 15 days नोटिस तो केते दिन रो नोटिस हमर दरकार आ पई हां 14 days रो नोटिस ओके सो टैक्सेशन लॉ ए दीटा का कम्स अंडर जे एनीथिंग रिलेटेड टू टैक्स एटा ओटे मनी बिल ता में जो कहितले केते नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल 110 रे अछि तो 110 अनुसार एनीथिंग टैक्स रिलेटेड इंपोजिशन हो एबोलिशन हो अल्टरेशन हो एनी टैक्स रिलेटेड जिंस हमर ओटे मनी बिल कैटेगरी हमर अछि ओके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल कम्स अंडर एटा हमर ऑर्डिनरी बिल सो आंसर कोन 3 and 4 हमर करेक्ट अछि हां टाइप ऑफ मेजॉरिटी कोटा हमर को टाइप रो मेजॉरिटी हमर रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने कोन मोर देन 50% ऑफ द हाउस ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ओके सेकंड हला सिंपल मेजॉरिटी हला मेजॉरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग इफेक्टिव मेजॉरिटी हला मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इफेक्टिव स्ट्रेंथ हला हमरा मींस द टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ वैकेंसी okay then special majority hela majority of the total 2/3 member of the total strength of the house एज रु कोन हमरा आंसर कोडा हमरा अच्छा हां 1 2 3 4 ओके देखो एटा तमरा क्वेश्चन पडितला गोटे थरा देखि दियो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने कोन मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माने हमर धारा लोकसभा रे एबे अछनी 543 so इधर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने कोन by 2 plus 1 त माने केते ना 200 हमर 73 टा सीट हमर रहगा 272 होचे हमर मेजॉरिटी ओके तो टोटल हाउस रा स्ट्रेंथ जति की डिवाइड बाय 2 plus 1 एटा होचे कोन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओके सिंपल मेजॉरिटी माने कोन सपोज सेही दिन हमर 450 जन प्रेजेंट अछन जेतले वोटिंग बे तो सेही थिरे हमर बाय 2 करिवो प्लस 1 तो हमर केते हे गला ना तमरो एठी 200
26 ना से 223 जन ना केते हां 226 225 प्लस 1 226 ता माने सेही दिन एडा होची कोन सिंपल मेजॉरिटी होची हमर कोन ना प्रेजेंट एंड वोटिंग समय जति के मेंबर अछंती तार आधार अधिक प्रेजेंट एंड वोटिंग समय जति के प्रेजेंट अछंती तार आधार अधिक होची हमर सिंपल मेजॉरिटी एडा कोन हला ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओके तापर हमर कोन होची इफेक्टिव मेजॉरिटी केते इफेक्टिव मेजॉरिटी होची कोन धर आमे कहबा 543 हमर लोकसभा टोटल मेंबर किंतु 3 जनकर सपोज डेथ हो जाय एबे हमर सपोज जनकर नुआपड़ा ना कोठिकर हमर बीजेपी रे धर जन ना कोठिरा हमर एमएलए जनकर डेथ हो जाय तो सी सिटिंग एमएलए थिले डेथ हो गला तो जते धर विधानसभा रे हमर वोटिंग हबो तांको तो माइनस करा हिजबो ना सीधा नाहांती एबे आउथरे री इलेक्शन है कि हमर कलाहांडी नुआपड़ा एरिया रो हमर आउथरे इफेक्टिव मेजॉरिटी माने कोन ना तमरा वर्तमान केते प्रेजेंट अछंती माने टोटल नंबर ऑफ सीट माइनस ना नंबर ऑफ वैकेंसीज वैकेंसी ड्यू टू डेथ हो जहां भी हो तो हमर धर 540 जन अछि तो बाय 2 प्लस 1 माने 271 होची हमर कोन ना इफेक्टिव मेजॉरिटी ओके इफेक्टिव स्ट्रेंथ कोन ना जो हमें कहले 543 माइनस नंबर ऑफ वैकेंसी ओके तो एडा हमर होची स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग तो वोटिंग समय रे प्रेजेंट एंड वोटिंग समय रे जति लोक अछंती तार 2/3 मेंबर प्लस हमरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने दी डागा सैटिस्फाई होता दरकार सपोज हमें कहबा जे 543 रो आधार अधिक कोन ना तमरो 262 नंबर लोक मिनिमम हमरो ता सपोर्ट रे दोथिबे प्लस सपोज सेही दिन हमर 450 आसीछन तो तार 2/3 मेंबर माने केते ना 300 लोक सेही बिल फॉर देबा दरकार ओके सो 300 लोक तो दीटा का सैटिस्फाइड करूची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी टोटल स्ट्रेंथ माने 543 रो आधार अधिक 272 भी सैटिस्फाई कला आन जति मेंबर थिले से तार सेटा भी सैटिस्फाई कला तो ई टर्म गुडा को मने रखिबो ओके तो ताकू नै कि तमरो क्वेश्चन पडितला सो आउट देखि दिया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने कोन मोर देन 50% ऑफ द हाउस टोटल स्ट्रेंथ ठीक अछि सिंपल मेजॉरिटी माने मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग बेले जति प्रेजेंट अछन तार आधार अधिक इफेक्टिव मेजॉरिटी माने मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इफेक्टिव स्ट्रेंथ यस इफेक्टिव स्ट्रेंथ माने टोटल स्ट्रेंथ माइनस नंबर ऑफ वैकेंसीज धर 3 जन लोकंगर डेथ हो जायछि 543 माइनस 3 540 स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल स्ट्रेंथ नो एडा हमर कोन टोटल स्ट्रेंथ नो एडा प्रेजेंट एंड वोटिंग रो हमर 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओके तेनो आंसर कोन हे जिवो ना 1 2 3 4 हे जिवो करेक्ट आंसर ओके which of the following statement are correct in respect to the sitting of the parliament in year 1955 a lok sabha committee had paused a timetable for parliamentary session with 3 times a year. It suggested budget session from February 1 to May 7, suggested monsoon session from Metiki and suggested winter session from Metiki. Amara kono na 1 and 2 तो हमर कोन ना 1955 रे लोकसभा कमिटी गोटे बसथिला जोटा कि हमर 3टा वर्ष को 3 थर बसिया पई हमर एटा प्रपोज करा हेतला ओके एंड किंतु वर्तमान तमर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोठी लिखा है कि जे वर्ष को हमर 3 थर पार्लियामेंट बसिबो मिनिमम हमर केते थर बसिबो लिखा है कि किंतु आमे कहिचे पार्लियामेंटरी कन्वेंशन अनुसार मिनिमम 6 मंथ रे वन टाइम बसिबो विद इन 6 मंथ वंस दे हैव टू सीट हमर 6 मास रे थरे हमर बसिबो तेनु एमिति तमर जो आमे कहूचे 3टा सेशन हबो मैंडेटरी जे हमर बजट सेशन मॉनसून सेशन विंटर सेशन एडा हबा मैंडेटरी की मैंडेटरी नहे तो किंतु हमर प्रपोज जो करा हेतला एडा हम कहूचे जे प्रपोज कोन करा हेतला जे बजट सेशन हमर फेब्रुअरी 1 रु मे 7 एमती एटा प्रपोजल दिया जायतला एंड
मानसून सेशन ए सब गुडा काम नहीं एबे तो मानसून सेशन तमे देख अगस्त 20 रु बसिला सेप्टेम्बर 20 जाए ना केते जुलाई 20 रु हमर बसिला अगस्त 20 जाए हमर जोडा हमर सेंटर रे बसितला ओके तेनु एमिति किछि गारंटेड नहीं जे कोडा एमिति जो हेछि ओके सो आंसर हमर कोन होछि ना तमरो सी हेजबो करेक्ट आंसर डेट मेंशन हेनी नहीं प्रपोजल एडा ए जोडा कहि छेडा हमर लागू हेनी किछि ए कमिटी प्रपोजल देइथिला इथे डेट में भी चेंज हेतिबो तमे देखिबो से कमिटा कोन कोन प्रपोजल देइथिला ओके आउ की बाहर अछंती कि डाकी देओ के ना दे तो so during which part of the public policy cycle does the government explore potential policy response okay तो एडा हमर कोन होची ना policy formulation okay so b is the correct answer हमें गोटे क्लास करबा पब्लिक पॉलिसी ऊपर हमें क्लास करबा okay तो 2022 रो जहा जहा क्वेश्चन थिला we have हमरो क्वेश्चन सबुडा 2022 रे हम करले ओके सो लेट्स सी हमें 2023 रो क्वेश्चन जदी ओपीएससी साइट रो देखियो एमती कोन ओपीएससी साइट हे जाय बस तो 23-24 देखियो तेणु इवन इफ हमर जहाँ भी क्वेश्चन पड़ू गेस करिवो ए भलिया क्वेश्चन जदी पडुची माने डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन पडुची समस्त पई डिफिकल्ट तेमती कट ऑफ मार्क कम जितो ओके एंड एबे जो हमें कहूचे जो माने तमे प्रीलिम परीक्षा दबो एई थरो ट्राई करो मैक्सिमम क्वेश्चन करिया पई जदी तमे 50 60 65 एमिति क्वेश्चन करिवो सेथिरे माने पास करिवार पॉसिबिलिटीज बहुत कम एथरा पोस्ट होची कम पोस्ट अछि पाखाबाकी जनरल सीट हम 70 टा कहूचे सो 800 पिला पाखाबाकी पास करिवे तेनु तमे जदी सेफ साइड खेलिबो मु मोर नेगेटिव हे जिवो पिला आखि बुझी कि जे 100 100 गोल बुलोचंती माने प्राय पिला पास कर जाउछन माने तमरो 40 जदी 30 टा पाखाबाकी ठीक होउची 30 35 टा तमे जदी माने गेस करी कि 90 95 टा करूचा ताल पास करी पॉसिबिलिटीज अधिक अछि काहे कि ना ओपीएससी रे 10 15 टा क्वेश्चन तमरो एमिति एपर्ट सेपर्ट कंफ्यूजन क्वेश्चन अछि से माने इवैल्यूएट करनु तेनु तमे जदी 50 60 टा रेंज रे करिवो तमर तो 15 टा क्वेश्चन ठीक थिले भी तमर इवैल्यूएट हेलानी भूल थिले तो जो माने बंची गले तो बहुत एपर्ट सेपर्ट हबो तेनु सेति पई तमे टिके हायर साइड रे करिवो ट्राई करिवो भूल हो तो 50 टा खने क्वेश्चन तमे जदी करूचो सेहिथरु जदी तमे भाबुचो मोर 15 टा 16 टा क्वेश्चन ठीक हबो ताहले डेफिनेटली तमे पास करियो 15 16 टा क्वेश्चन ठीक ही होई छै ओके 50 टा देखो ए मानले भी 16 टा एथु ए बाहरिबा 16 टा जदी ठीक होची तमे 6 मार्क प्लस हे दोछ ओके ये पळे सरी गेला ना एथुर हमें पॉली जो एनवायरनमेंट रो जो ये कहूचे इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन हमें करथिले ओके हां
देखो which of the following is not included in the article 19 of Indian Constitution? C. C. कोडा C. नहीं सी freedom of detention, freedom of speech and expression 19 सब clause केते अछि 19 A. ओके 1 A. है हम तापर freedom of movement 19 sub plus D. ओके सब clause D D. जोडा में होजे 4 तापर freedom of association हां C रे अछि ओके हमरो C रे अछि हमरो peaceful association without arms हमें जो ये करि परिबो and detention freedom of detention ता हमरा कोथरे कहूचे 22 अरेस्ट जो करा होची इलीगली डिटेन करके तमे रखि परिबो सो एडा कोटा नाही तो हमरा सी डा होची नॉट इंक्लूडेड ओके राइट टू प्राइवेसी हमर कितना नंबर आर्टिकल में कहले हमर 21 से 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिक्लेयर राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट हेडेड बाय जस्टिस जे.एच. केहर तापर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव हिज हिस्टोरिक जजमेंट ऑन अगस्त 24, 2018. Justice J.S. Keher was former 42nd Chief Justice of India. He was appointed as Chief Justice of India in the year 2017. Okay. कौन हवा आंसर आ रहा? तो इधरे पूरा जजमेंट को नेकी तमरा क्वेश्चन ता पड़ी छी जे हमरा राइट टू प्राइवेसी जो हमें कहले तारा जजमेंट को नेकी पड़ी छी कौन हवा आंसर आ रहा? 1 and 2. Okay, so correct answer होची कोन आरो 1 and 2 हबो correct answer. So ए जो हमर राइट टू प्राइवेसी केस रे 9 जज बेंच एटा हमर बसला. Okay, जस्टिस जेएस केहर हमर थिले and Supreme Court gave his historic judgment on August तेनु मेन कथा हला आकु नेई की गोटे पैराग्राफ पढितला ताकू कॉपी करके एमती पढि तेनु डेट सह से हमर केबे अगस्त 24 ना 2018 रे दिया हितला बोली डेट पढि ए लेवल क्वेश्चन जदी जाने पढिबो भी माने यूपीएससी रे त एमती पढिबोनी काहे जदी पढिबो फंडामेंटल राइट हमर को जज को टाइम में आसीतला एमती डेट पढे फैक्चुअल क्वेश्चन एडा हमर फैक्चुअल क्वेश्चन हम ओके तुम कहबो अगस्त 23 रे कि 24 जो अगस्त 24 रे एमती पर्टिकुलर डेट मन रखबा डिफिकल्ट अगस्त 24 2018 रे आसला तापरे ये केते नंबर चीफ जस्टिस थिले जेएस के हां 40. ओके 44 चीफ जस्टिस थिले तेनु सेइडा भी हमर एबे हमर चीफ जस्टिस के अछंती संजीव बीआर गवाई अछंती केते नंबर माने ओके तेनु माने 50 सेकंड सर 50 सेकंड कौन तांग ना बीआर गवाई ओके तेनु मने रखि थाओ एडी पढुची ए 40 सेकंड कि 44 तेनु आंकर पढि जिवो बीआर गवाई केते नंबर थिले पुनी तांकर कोन ओडे जजमेंट जदी पढिला तो सेमती मने रखि थाओ 50 सेकंड तो ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केबे हमरा अपॉइंटेड हेतिले हां 18. Okay, so he was appointed as the Chief Justice of India in 2018 रे. Okay, 17 रे हमना 17 ना 18 रे 18 2018 रे. Okay, so answer हमर कोन होची ना तमरा 1 and 2 इज करेक्ट आंसर. तो एथरे को गुडा हमर four amendment to the Indian Constitution are given below related to scheduled caste and scheduled tribe. Coda amara coda related to scheduled caste, scheduled tribe. Ko 102. बेकरिया को okay. डी हो 865 डी हो 5. D. A कहउछन्दी okay. Okay, so list of amendment कथा कोआ अछि. Okay. Okay. A हबो Okay, first amendment act रे scheduled caste scheduled tribe ऊपर कोन को है first amendment act रे then 8 65 और 95. Okay. देखिबा amendment उडा तो एथिरे सब amendment उडा तुमको देखिया पड़ो. Okay. सर एमटी क्वेश्चन
माने एलिमिनेशन ही केमते करिवो किछि यदि जाना न 102 टा हमर कोन थिला ओके एससीबीसी थिला तो एनसीबीसी थिला तो एटा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऊपर पचरा हिची तो डेफिनेटली तमर सेटा तो काढी दबो तुम बीटा तो हबनी काहे कि ना तमर एटा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल तो 102 अमेंडमेंट एक्ट का तुम जानि छ तो एटा होची नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास तो एटा हमर कटि जीवो ओके हां ओके 19 रे 95 भी सही एससी बीसी को नहीं किया 95 भी एससी एसटी सॉरी एससी एसटी को नहीं किया ए हबो ओके तो ये अमेंडमेंट टा ठीक भल से देखिबो ओके तो आर सब अमेंडमेंट उडा देखिबो एटा हमें आउ थरे देखि दबा एटा गोटे कारण सब अमेंडमेंट उडा पढिया पड़ो ओके सो सेति पई सेमिति जदि थबो कोडा कंफ्यूजन थिबो नॉट इवैल्यूएटेड रे पळेबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन related to fundamental right are not available to foreigner 15 16 19 डी डी तो कोडा नहीं डी, ना हमारा आंसर डी हेजबो करेक्ट आंसर ओके तो आर्टिकल 15 16 19 29 आउ 38 हमर कोन ना अवेलेबल टू फॉरेनर मानन को नाही एटा केवल इंडियन सिटीजन मानन को अवेलेबल तो जो 15 टा हमर कोन थिला no discrimination on the ground of race सब बात 16 टा इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया सिटीजन अगर नहीं आते बात है 19 टा होची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेतरा में कहले 29 टा होची एजुकेशनल और कल्चरल राइट जो हम कहचे 30 टा ए दीटा माइनर तो एई गुडा का हमर कोन फॉरेनर माने तो हमर अवेलेबल नाही आर्टिकल 18 क्लॉज 2 टा भी ओनली इंडियन कोच ना कोडा कोडा आर्टिकल 18 क्लॉज 2 ओनली इंडियन हां ना बहुत गुडे इंडियन माने को तो आहुरी गुडे का हमर जो अवेलेबल अछि तमरो ओके तो एटा पडितला गुडे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो पब्लिक पॉलिसी रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी हां इट इज नोन एज patronage policy. It meant for specific segment of the society. It is concerned with regulation and control of goods and service. Require little administration discretion. कौन हवा आंसर? तो 1 1 3 4 2 4 ए हबो सर ओके एडा मॉक टेस्ट ही पकेइथिले कौन आंसर आरो हमरा मॉक टेस्ट रा भी क्वेश्चन एडा में पकेइथिले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सर ए हबो ओके सो 1 2 4 हिजबो तो डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी रो पैट्रोनेज पॉलिसी and meant for specific segment of the society and it requires little administration discretion okay it is not concerned with the regulation control of goods and service public policy for social security tax due process of law and procedure established by law. Which of the following statement are correct in respect to due process of law and procedure established by law? Due process of law focus on formal adherence to the legal procedure set up by the government, and procedure established by law emphasizes the protection of individual right and fairness in application of the law and proceeding. कौन हवा? उल्टा ही जी. Okay. दीटा को opposite. Due process of law माने कौन ना emphasis on the protection of individual right and fairness in application of law and legal procedure एटा आरंभ कथा सेटा आरंभ कथा procedure established by law माने कौन focus on formal adherence to the legal procedure by the set by the government तो एटा उल्टी सिर्फ दीटा का रॉन्ग अछि सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टे नेचुरल जस्टिस ने कोनडा ड्यू नेचुरल जस्टिस नेचर टा कार प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना नेचुरल जस्टिस जोडा में कहजे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने तमरो सेही टाइम रे जहां हमरो रिक्वायरमेंट अछि तो जोडा जस्टिसेबल सेटा ही हमरो
माने एप्लीकेबल रहइबो तेनु 15-50 वर्ष तळर लॉ बर्तन मे नॉट बी रिलेवेंट नाउ तो समय अनुसार जोडा हमें लॉ टा को अडॉप्ट करिया कथा एटा होचे हमरो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ माने ऑलरेडी संविधान रे जहा लेखा अछि मे बी सेइडा वर्तमान रिलेवेंट नुह किंतु हमें ताकू ही फॉलो करूचे एटा होची प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जोटा की प्रोसीजर सेट बाय द गवर्नमेंट और द संविधान जोटा अच्छी से प्रोसीजर को फॉलो करूचे एटा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने तो एट द टाइम ऑफ द माने नीड समय रे हम जो कहूचे गोटे जोटा राइट जोटा फेयर तो सेटा हमको अडॉप्ट करिया को पड़ियो सेटा होचे हमर ड्यू प्रोसेस सो दीटा का हमर रॉन्ग अछि So 64, which one of the following statement are correct in respect to special session in the parliament? The term special session of the parliament defined on article 85 of the Indian Constitution. Article 352 of the Indian Constitution speaks about the special sitting of the parliament. The proceeding of both house of the parliament in special session would be limited. It proclamation of emergency issued if a proclamation of emergency is issued when parliament is not in session 1/3 of Lok Sabha 1/3 of Rajya Sabha member asks the president to convey a special session on the parliament. कौन आंसर आ रहा चारिटा तो तमरो डेफिनेटली भूल अछि तमरो जदी इमरजेंसी हमर लागू होछि बोथ हाउस रे हमरो को फिरे हमरो पास होबा दरकार स्पेशल मेजॉरिटी पास होबा दरकार ओके तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 1/3 नो 2/3 मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड 2/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा ओके तो सेति में हमरो कोन होछि ना तमरो एटा चारिटा तो तमे काटि देई परिबो द टर्म स्पेशल सेशन हमरो ऑफ पार्लियामेंट एटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन हेछि कि स्पेशल सेशन कोडी डिफाइन हेनी तेनो आंसर कोन हबो तमरो बी हिजो करेक्ट आंसर 2 1 3 हिजो करेक्ट आंसर चारिटा भी रॉन्ग अछि फर्स्ट भी हमरो रॉन्ग अछि स्पेशल सेशन कोडी हमरो मेंशन आउ दीटा का हमरो ठीक है सर स्पेशल सेशन का कोन डॉट स्पेशल सेशन ए क्वेश्चन कम भाई पढिला स्पेशल सेशन क्वेश्चन काहे कि ना लास्ट टाइम जो नारी शक्ति अधिनियम बिल आसीथिला सेटा प्रथमे पार्लियामेंट रो गोटे स्पेशल सेशन डका है कि प्रथम नुवा बिल्डिंग रे तार इनागुरेशन जो दिन फास्ट हमर प्रथम सेशन बसिला नुवा बिल्डिंग रे सेथिरे स्पेशल सेशन ए नारी शक्ति अधिनियम बिल आसीला तो सेति पई से जो क्वेश्चन हमर स्पेशल सेशन जो क्वेश्चन जो आसीथिला तारि पई से करेंट रे न्यूज रे ओके तेनु पर्टिकुलरली तमरो करेंट रिलेटेड ए जो क्वेश्चन सब हमरो लास्ट एबे जो लास्ट 2 इयर्स रे पढुचे हमरो मेजर क्वेश्चन जोडा को अनटच एरिया रो पढुचे एंड जोडा को न्यूज रे अच्छी पढुचे ओके तेनु ए वर्ष रे जेंति कि हमें न्यूज रे इलेक्शन कमिशन हला वाइस प्रेसिडेंट रहिले एसआईआर रहिला गवर्नर नकर हमरो रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट रहिला तो से रिलेटेड क्वेश्चन हमें माने एक्सपेक्ट करते जो जोड़ा का हमरा बे करेंट रो न्यूज रे अछि कारण सेही ट्रेंड को नै किस माने पकोछन एंटी डिफेक्शन लॉ फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd amendment act 10th schedule of Indian constitution was inserted in 1989 okay so if a member who is independently elected join any political party he is not disqualified एटा प्रथम तो भूल होची कोडा ना जदी इंडिपेंडेंट मेंबर तमर कोनोसी पार्टी रे जॉइन कला से डिस्क्वालिफाइड हे जिवो नॉट नहीं तेनो एटा प्रथम चारिटा भूल अछि 1 out 3 ओके तापरे एंटी डिफेक्शन लॉ हमर कॉन्स्टिट्यूशन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आसी एटा ठीक अछि ओके 10th schedule of Indian constitution inserted in the एटा केबे हमर हला 1985 एटा दुईटा भी भूल अछि ओके एंटी डिफेक्शन लॉ वाज रीइंफोर्स्ड इन द ईयर 2002 ओके तो एटा भी भूल अछि एंटी डिफेक्शन लॉ रे हमें जो 1/3 रू 2/3 हमें कले एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आस्थिला जो आगुरु जो स्प्लिट होतला पार्टी 1/3 थिला एटा 2/3 हमर कुआगला जे 2/3 हेले केबे हमरा थिला 91st अमेंडमेंट एक्ट
91st केबे केबे आसला एटा 2003 तेणु ए क्वेश्चन हमर रॉन्ग अछि एटा इवैल्यूएट ही हबन ओके तो ए क्वेश्चन रॉन्ग अछि तेणु इवैल्यूएट ही हबन तेणु तमे भाबी के आस्थिबो मोर ठीक बोली तेणु तमे ओके सो आंसर कोन हबो ना एटा नॉन ऑफ ओके तो ए क्वेश्चन हमर भूल अछि So private member bill ऊपर गोटे क्वेश्चन नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल टिके देखि दो हां आसी जाओ तो प्राइवेट मेंबर बिल को लेके हमर कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल ए प्राइवेट मेंबर बिल इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन ए मेंबर ऑफ ट्रेजरी बेंच फास्ट तो एटा रॉन्ग ना ठीक ना भूल भूल अछि प्राइवेट मेंबर कोन अदर देन जे हमर गवर्नमेंट मिनिस्टर अदर देन ए मिनिस्टर एटा अदर देन मिनिस्टर तो सेमान को हमें कोन कहउछे प्राइवेट मेंबर प्रथम तो एक भूल अछि सो एटा रॉन्ग द बिल ऑफ दिस नेचर हैज इंट्रोड्यूस्ड एंड डिबेटेड ओनली ऑन मंडे ओके तो एटा केबे हमर डिस्कशन हुए फ्राइडे it introduction on the house requires 1 month notice a constitutional amendment bill may be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha so एटा ठीक गोटे constitutional amendment bill टा कोथरे लोक सभा रे हे परिबो राज्य सभा रे हे परिबो ओके तो तमरो आंसर कोन हबो ना 3 and 4 हे जबो करेक्ट आंसर आंसर 1 and 2 हबो ना नॉट पचास कोन पचारछि नॉट पचारछि ओ सॉरी Yes, सॉरी sir. ओके सॉरी तो नॉट पचारछि तो हमर आंसर कोन हबो 1 and 2 हे जबो तो एमिति जोडी नॉट पचारथिबो आगे गोटे गोल बुलेबो एटा नॉट कारण मो माइंड रे थिबो जे नॉट पचारछि त मारि हां ओके सो नॉट पचारछि तेनु तमे भाबिबो जे कोटा ठीक मार दे आसो ठीक का भी थिबो 3 and 4 धर तमे देखिजो तो सेटा भी थिबो ओके भूल रे मार दे आसो सो नॉट टाको सबल टिके ध्यान रखुथबो ए देखा एडवोकेट जनरल पढिछि हम एबे डिस्कशन करथले एडवोकेट जनरल तो एडवोकेट जनरल हमर नॉट पढिछि तेनु आगो प्रथम गोल भूले दे एटाको ओके से कोडा नॉट करेक्ट एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इट्स योर स्टेट ठीक अछि कितना नंबर आर्टिकल कहितनी 165 he was appointed by the governor on advice of the chief justice of the advice कोन पई एटा भूल अछि appointed by the governor तो हेबो advice of the chief justice ने advice of the कहार chief minister of the council of minister advice करिए okay he should be eligible to be appointed as a judge of high court रा जज हा पई ठीक अछि he should not be more than 65 years age एटा हमर कोन अछि एमिति किछि हमर नाही सो आंसर कोन हबो 2 and 4 हे जो हमें कहितले एक तांको अपॉइंटमेंट किए दउछंती गवर्नर दउछंती ओके ही शुड बी ए मेंबर ऑफ आइदर कमिटी एनी मेंबर कमिटी रो मेंबर हे परिबे किया है कि डिबेट डिस्कशन में भाग नै परिबे विदाउट वोटिंग राइट तेनु एटा हमर कोन हबो आंसर 2 and 4 दगला हमर हां 1 not correct बचे ओके सॉरी so 2 and 4 हमरो not correct so 2 and 4 है से not correct ओके तेनु भल से एमती करथो कारण पिला मु जानि छी तमरो माने कोन होची सब बेले तमे दी तीनटा क्वेश्चन सिली मिस्टेक करबा आ से दी तीनटा क्वेश्चन ही तमरो से दी तीनटा सिली मिस्टेक ही गोटे वर्ष तुमको पूरा पछुक नै तेनु जोगुडा 100% ठीक सेथिरे जेंती भूल न गोटे जदी न आसुची गेस करी कर देला सेटा बाधी बनी आसुथिबो आ तमे जोटा जानि जेटा ठीक बोली नॉट करेक्ट जगह रे करेक्ट मार दियस तेनु सेरा बहुत बाधी आ मन रख परीक्षा रे एमिति 3-4टा क्वेश्चन हबो ही हबो सिली मिस्टेक तेनु परीक्षा दा सब दिन माने पूर्व दिन सबुठो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची ठीक रे सोइबा आ परीक्षा पूर्व दिन निद होनी काली कोन हबो परीक्षा पास करिवो बहुत पिला निद होनी आ जोटा की फर्स्ट हाफ तो चले दबो सेकंड हाफ जो एबे जो 1:30 टू 3:30 होची खाई के असला पर तम सीसाट सेतले निद लागुथो प्रबल एक रे निद लागुथो दुई रे मुंडा काम कर ओके तो से जिंस जेदि पे हमें एबे जो टेस्ट गुडा करूचे तमर पूरा एग्जैक्ट ओपीसी टाइम अनुसार 1:30 टू 3:30 तमर सीसाट होची एंड तमर एटा रहउचे हमर 10 12 एग्जैक्ट सेम टाइम रे तो तमे प्रैक्टिस करके जाओ तीनटा हमें सेही भलिया करूचा
10 जोड़ा हमर रविवार दुर्गा पूजा पूर्व आम सारी दवा सब सो रविवार दिन हमर फाइनल मॉक टेस्ट तेणु सेटा 39 और 40 नंबर हम डोंट मिस इट तो पूरा ओपीएससी रे जेमती टाइमिंग 10 रु 12 1:30 रु 3:30 तो सेटा हमर कोन होची दियो सेटा मिस करनी ओके कारण 1:30 रु 3:30 टाइम रे तो माइंड काम करछि ना नहीं तुम चेक करिया को पड़िबो आ सेही समय सीसाट आ खाई के आसला पर निद लागुथबो आ एक तो माने मुंडा काम करनथबो निद लागुथबो पुनी मैथ तेणु सेटा को प्रैक्टिस करो सेही टाइम रे ही प्रैक्टिस करो 1:30 रु 3:30 तुम जदि सीसाट करूछ वर्तमान पढुछ सेही समय ही पढो सेही समय माइंड टा एक्टिव रहबा दरकार impeachment of the president in a parliament is a quasi judicial process एटा हमर कोन quasi judicial procedure तो हमर जो impeachment process हुए कोन तार कंडीशन हमर violation of the constitution okay violation of constitution नो violation केमिति constitution से violation करिवे जदि से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कथा न मानिले आर्टिकल 74 रे कोन अछि ना प्रेसिडेंट शुड act and according to the aid and advice of the council of minister headed by prime minister तेनु से जा कहबे सेरा मानिबे जदि न मानिले संविधान रो उल्लंघन हैला तांकु तापरे इंपीचमेंट करा दिबो अच्छा प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट करिया को हेले तमरो एटा इंपीचमेंट प्रोसेस ता लोकसभा राज्यसभा रे पास माने इंट्रोड्यूस हे परिबो ना को हाउस रे इंट्रोड्यूस हो आइदर हाउस रे हम रही परिबो ओके सपोज लोकसभा रे तमे इंट्रोड्यूस करिया चाहतो केते जण मेंबर हमरो एथरे हमरो रेजोल्यूशन पास करिया दरकार राज्यसभा रे केते लोकसभा रे केते 50 राज्यसभा 50 हां 1/4 लोकसभा रे ओके 50 हाउस 100 पूरा भू तेणु बोथ हाउस रे माने रख टोटल स्ट्रेंथ रो 1/4 ऑफ द लोकसभा 1/4 ऑफ द राज्यसभा सेटा तमर अन्य मानकर सुप्रीम कोर्ट जज केस रे एठी 150 कहबनी आ परीक्षा रे पढिबो तमे आ 150 आंसर रे थिबो ओके सो 51/4 हमर लोकसभा रो 1/4 राज्यसभा रो तो रेजोल्यूशन पास कला परे हमर कोन होची ना 14 डेज रे एडवांस नोटिस दिया जिवो बोथ हाउस रे हमर स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हला स्पेशल मेजॉरिटी में केते मेजॉरिटी तांग दरकार हमर ओके के को मेजॉरिटी पास हो दरकार 2/3 majority 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ओके टोटल स्ट्रेंथ तो पूरा एटा पूरा डिफरेंट आ जत्ते हमर मेजॉरिटी अछि हाईएस्ट मेजॉरिटी होछि प्रेसिडेंट एइथिरे हमर स्पेशल मेजॉरिटी दरकार नै स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेंबर एठी तमरा कोन 543 रो 2/3 टोटल स्ट्रेंथ रो 2/3 मेंबर हमर दरकार सो एटा पूरा डिफरेंट 1/4 ऑफ लोकसभा 1/4 ऑफ राज्यसभा then each house रे 2/3 of the total strength of the house pass कला परे हमरो तांको बाहर करा जाय एटा ओडे क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर ओके इलेक्शन कमिशन एथर लास्ट टाइम माने 22 रे भी पडिला 23 रे भी पडिला 24 रे भी एथर जो आसुजी पडिबो तेणु इलेक्शन कमिशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट से एथिरे भी कोन होउछ ना एथिरे ए वर्ष सब नॉट पके दै तेणु सब बेले तुम भाबिबो करेक्ट मार दे आसीबो तेणु नॉट सो आर्टिकल 324 ओके गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू make provision with respect to election of the legislature besides chief election commissioner two additional commissioners are appointed first time on January 1st 1990s the election commissioner amendment act 1980 made the election commission a multi member body the decision of the election commission member are made by unanimous vote तो प्रथमे unanimous कथा एडा ठीक ना रॉन्ग मेजॉरिटी हमर कोन हबो मेजॉरिटी वोट रे हुए तीन जण अछंती दुई जण जो पटे कहिले सेटा हमर मेजॉरिटी यूनानिमस वोट रे हुए तो चारिटा जो थिरा अछि काटी दियो ओके तेनु सॉरी उडा नाही चारिटा जो थिरा नाही काटी दियो तेनु दीटा कटि गला कोडा एटा कटि गला चारि जो थिरा नाही तेनु आंसर तमर कोन ना तमे एथिरे देखो 3-4 तो डेफिनेटली एटा पढिया दरकार नै एटा मल्टी मेंबर बॉडी एटा ठीक बाय डिफेक्ट ओके बर्तन हमें देखिबा 1 आउ 2 भितरे कोडा ठीक तो हमारा beside chief election commissioner two additional commissioner were appointed first time on January
फास्ट 1990s आ गोटे हमर हला जे पार्लियामेंट टू मेक गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ओके वन टा हमर रॉन्ग अछि जदि पार्लियामेंट हमर इलेक्शन करिवो ताले इलेक्शन कमिशन कोन करिवो ओके तो हमर पार्लियामेंट करिवनी तडा हमर की करिवो ओके तो तो एटा हमर इलेक्शन कमिशन करिवो ओके सो आंसर कोन हबो हमर ना 1 3 4 ओके सो सी कोनडा ऑप्शन 1 ठीक है सर सेट वन तो ठीक अछि 2 भी रॉन्ग अछि सर वन टू सर ठीक है रॉन्ग अछि सर 1989 रे जे 1989 रे आनले 16 अपॉइंटेड के 1989 देखिबो ओके तो बिसाइड एटा हमर जो आसिले फर्स्ट टाइम हम जनवरी 1 1990 ना 89 के देखि दबो सर सेट 1989 हबो 1 जनवरी लिखाई छी लक्ष्मीकांता खोली के देखिलो 16 अक्टूबर सर हां 16 अक्टूबर 1989 16 अक्टूबर 1989 हां अब 327 कोन ना गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर अच्छा इलेक्शन टू द आर्टिकल 327 कोन सर एटा ठीक है 24 ରୁ 29 ना आर्टिकल 327 कोन देखलो ठीक अछि ओके सो एटा हमर पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर तो तांको प्रोसीजर टा खाली हमर एठी मेंशन अछि ओके सो एटा जो 1990s लिखा है जेटा केते डेट टा केते कहला 16 अक्टूबर 1989 ओके 16 अक्टोबर 1989 रे हमर जणे रु 3 जण हमर मल्टी मेंबर बॉडी ओके सो आंसर कोन ना 2 3 4 हेजबो करेक्ट आंसर सो अंक भितरे कोडा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोडा ओके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोडा ओके तो एथिरे हमर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब तो एटा त हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो जोथिरे 2 3 4 ओके कोडा तेनु 6 ता जोथिरे अछि काटी दियो 5 ता भी जोथिरे अछि काटी दियो तो आंसर हेजबो कोन ना 2 3 4 ओके अन्य गोटा ट्रिब्यूनल हला नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी रहिला कंपटीशन कमिशन लॉ कमिशन एगुडा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहंती नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके तो एटा कितना नंबर आर्टिकल हमें कहले 148 148 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338 ए आउ एससी नेशनल कमीशन फॉर 338 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338 B okay so union list ro the list if gote question which are the following are not correct in the union list not correct pacharchi okay code amar correct nuhe there are 100 subject in the list union list upre pacharchi okay union list amar 100 tapre this list signifies cooperative federalism there are 15 subject in union list on which parliament has exclusive power to levy tax the supreme court has no jurisdiction over the matter of the union list not correct pacharchi सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कथा तो सुन तोटा तो भूल लागु छी 2 and 4 2 and 4 हो हां तोटा देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने कोन बोथ से रहिबा हमर सेंटर ताले यूनियन लिस्ट जोटा एटा एक्सक्लूसिवली यूनियन हमर लॉ करबा दरकार तो दुईटा तो डेफिनेटली हमर भूल दुई जोते नाही काटी दियो ओके सो 2 3 और 2 4 बितरु हमर सुप्रीम कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन ओवर द मैटर ऑफ द यूनियन लिस्ट नहीं तमे एमिदी गोटे लॉ आनिबनी जोटा कि तमे जदि कॉन्स्टिट्यूशन बाहर थिबो कोन सुप्रीम कोर्ट किछ कहि परिबनी कहि परिबो त जुडिशियल रिव्यू कांसेप्ट पूरा भूल हे जबो एनो सुप्रीम कोर्ट हैज द जुरिडिक्शन ओवर द मैटर इन द यूनियन लिस्ट तो एटा भी भूल अछि से पचारछि कोडा भूल सो 2 and 4 हमरो भूल हे ओके नॉट करेक्ट पचारछि सो 2 and 4 आम नॉट करेक्ट ओके
तेणु लिस्ट उपरु पढुची तेणु तापर टिके देखिबो को चारिटा आर्टिकल हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड करा जायतिला हमर 48 टा एटा कोन पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 48A एटा भी ऐड कराइतला एटा कोन थिला प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ऊपर हमर ओके ए डीटा मतलब हमने डेफिनेटली 39A भी कराइतला प्री लीगल एड पुअर एटा भी हमर हितला सो 2 4 6 जो थे नाही काटी दियो 3 4 6 7 आंसर हां हां 3 4 6 अबे 3 4 6 जोटा नाही 3 4 6 एठी अछि आउ तो आउ 7 टा 144 ए तो आंसर कोन हबो ना बी हिजबा हमरा करेक्ट आंसर ओके बी हिजबा हमरा करेक्ट आंसर बुझी पाइला ना नहीं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 43A थिला कोन पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री डीपीएसपी रे 48A कोन ना हमरा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट तो एटा भी हमरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39A टा फ्री लीगल एड टू पुअर एटा भी डीपीएसपी रे 144 एटा कोन 144A हां Supreme Court authority review constitutional amendment. ओके सो एटा हमरा कोन होची ना तारा 3 4 6 7 सो बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर हमरा माने आसीथिला द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फास्ट प्रोफाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एटा तो भूल अछि एटा हमरा कोन केशवानंद भारती केस ओके केशवानंद भारती केस तो से कौन बचे जी कोडा करेक्ट तो वन टा जोथिरे अछि आगो काटी दियो ओके वन टा जोथिरे अछि काटी दियो एटा तो भूल अछि सेकंड स्टेटमेंट को ओके तापरे इन सजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट parliament could amend any part of the constitution okay then Goloknath versus state of Punjab case supreme court ruled that article 368 only lays down the procedure to amend the constitution but does not give absolute power of the parliament to amend any part of the constitution in case of Vaman Rao versus Union of India supreme court said aside the basic doctrine कोडा ताल ठीक है हमरा हां 213 हमरा ठीक ओके गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रे हमरा कुहा गला जे आर्टिकल 368 हमरा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किंतु एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट को दिया जायनी एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को से माने अमेंड करि परबे सो 213 आर करेक्ट ओनली एटा हमरा कोन ना 2 आउ 3 हमरा करेक्ट अछि 2 1 3 आउ छी करेक्ट ओके तेनु गोटे त तमे एलिमिनेट करि परिबो तो 50 50 को असला पर जदि तमे टिके कंफ्यूजन होछ डेफिनेटली गेस करके आसीबो भूल हो गेस करके आसीबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट टू द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कोडा हमरा करेक्ट इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज of the National Capital Territory Delhi, Pondicherry, and were to added to Electoral College by 7 Constitutional Amendment Act. Okay, 70. Then number of value of the vote, number and value of the vote are based on the population of 1971 census as per 42nd Constitutional Amendment Act. 84 Constitutional Amendment Act fixed the value of the vote based on population census 2011, the entry of MLA of NCR Delhi and Union Territory Pondicherry came into effect in 1st January 1993. So, कौन हमारा correct answer आ रहा? Okay, so कौन हवा? 1 and एटा तो हमरो जो पॉपुलेशन सेंसेक्स हमर 1971 तो निया जाय छै ना आज पर एटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना कोन हां यस सर सेटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
42nd तापरे constitutional हां yes sir तापरे 86 रे से 2000 सॉरी 2026 पर्यंत डिलिमिटेशन को ग्रहण कर देते ओके हां सेटा हमर ए जो 84 constitutional amendment act रे fix the value of the bear द हमर कोन ना पॉपुलेशन सेंसस 2071 तो रहइबो किंतु 2026 पर्यंत सेटा फिक्स करा जाय ओके तेनु ए दीटा Yes, sir. भूल अछि सो पॉपुलेशन सेंसस से वर्तमान भी जो पॉपुलेशन सेंसस निया होछि कहार निया होछि 1971 रा निया होछि तेनु 1971 रा निया होछि किंतु एटा 2026 जाए आमे सेही पॉपुलेशन सेंसस अनुसार हमर जो नंबर ऑफ सीट्स जोटा हमें देखु छे ओके and the entry to MLA to NC जो दिल्ली और पांडिचेर रो ML मानन को जो ऐड करा गला एटा केबे हमरो आसिला केबे आसिला एटा ना हमें 70th constitutional amendment act केबे आसिला हमरो एटा जो हमरो लेखा आइछि 1993 72nd आसिला 73rd तो 1992 रे आसिला तेनो 1992 माने एटा ता पूर्व रे आसीबो तो डेफिनेटली एटा जो 70 constitutional amendment act आसिला ता पूर्व रे डेफिनेटली 1993 तो नु ता पूर्व रे तमे देखिबो 17th constitutional amendment act केबे आसिला ओके तो सेटा हमरो करेक्ट आंसर तेनो एथु गेस करि परिबो जदि 73rd हला 1992 तो ये यदि 70 अमेंडमेंट एक्ट रे आसिला तो डेफिनेटली 1992 पूर्व रे आसीबो एटा हमरो रॉन्ग अछि एग्जैक्ट डेट तमे माने रखिबो एथु तो आंसर तार हे गला कोन ना तमरो 1 and 2 हे गला हमरो करेक्ट आंसर तो एथिरे को शेड्यूल ले कोन अछि ओके को शेड्यूल तरे हमरो को कोन अछि तो शेड्यूल कोडा हमर कोन पहिचे एथिरे हमर नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू शेड्यूल कोडा हमर मैचिंग करूनी ओके एलोकेशन सीट द काउंसिल ऑफ ये एटा हमर कोन अछि एटा 4 रे हुए ओके एटा 4 रे हुए एटा हमर नॉट मैचिंग ओके तापरे हमर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया हमर 5 अच्छा 5 रे 6 रे हमर अछि कोन ना मेघालय त्रिपुरा मिजोरम तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एटा हमर आसीथिला सो 4 नंबर टा ठीक अछि ओके तो कोडा नॉट मैचिंग कहि ना तो फर्स्ट हमर दुईटा हमर मैचिंग करूनी एंड कोडा टूटा हमर कोन रिलेटेड टू सैलरी अलाउंस ओके तो 2 and 3 हमरा होची नॉट करेक्ट 2 and 3 होची हमरा नॉट करेक्ट ओके सो बी हिजबो हमरा करेक्ट आंसर एटा हिजबो कोन ना एलोकेशन ऑफ सीट होची शेड्यूल 4 एटा होची हमरा कोन शेड्यूल 5 ओके एटा ठीक अछि एंड एटा ठीक अछि सैलरी अलाउंस ऑफ द सीएजी हला और हमरो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जज हेले स्पीकर मानकर सैलरी गुडा को हमरो सेकंड शेड्यूल ओके तो शेड्यूल ऊपर हमरो क्वेश्चन पडुची सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऊपर हमरो क्वेश्चन पडितला कोडा नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली Which of the following statement are not correct related to Constituent Assembly? Election to the Constituent Assembly are held in July and August 1946. Indian National Congress owned 208 seats. Mussalman League owned 73. Princely State owned 93. Fourth correct. From answer. So A 1 2 3. Yes, sir. तो हमरा कोन ना एटा तो तमे जानि छ जे ए जो हमरा हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो एटा जुलाई अगस्त 1946 रे आफ्टर कैबिनेट मिशन प्लान रे हमरा एटा इलेक्शन आइथे हला एटा ठीक अछि इंडियन नेशनल कांग्रेस केतडा जितिथिला 208 टा ठीक अछि ओके मुसलमान लीग केतडा 73 प्रिंसली स्टेट हां तो मिसे दियो तो हां सर प्रिंसली स्टेट तो हमरा सेथिरे पार्टिसिपेट ही करना थिबो ओके
तो से आमर नॉट करेक्ट कहीं ना ये तो प्रिंसली स्टेट आमर सी पचार ओन नॉट करेक्ट पचार कोड़ा ओके सो तो ये आमर कौन हो तो एभालुएट ही हबनी ओके ये आमर एभालुएट ही हबनी ओके और नॉट करेक्ट पचार ना तो एभालुएट ही हबनी नहीं नेशनल कांग्रेस केतटा जीती छी तो एटा ठीक अछि ना 208 ओके तेणु आर आंसर माने नहीं ओके नॉट एभालुएटेड ए भले क्वेश्चन हमरो एटा हमरो अगस्त ऑफर हमें हिस्ट्री क्वेश्चन सो ठीक अछि हमें एतिकी डिस्कशन कले जोड़ा हमरो पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन थिला आउ किछि क्वेश्चन अछि पॉलिटी रो नहीं ओके सो एबे जो डे बाय डे तमे देखुछ पॉलिटी क्वेश्चन डिफिकल्ट ही जीवा तमरो किंतु ओरिड बना गेस करके करिवो जदि तमे जानिछ माने एफर्ट जदि आ भीतर किंतु मेन प्रॉब्लम एथिरे क्वेश्चन कोन होउची डेट पके दोची एबे माने जो फैक्चुअल क्वेश्चन तमे देखिबो यूपीएससी रो कोनोसी क्वेश्चन ने डेट लिखा नथिबो कि पर्टिकुलर डेट तो एठी कोन ना डेट रिलेटेड पड़ी जाउची सेतपय टिके फैक्चुअल मोर क्वेश्चन हे जाउची ओके तो ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन सो आमे पुणी काली भेट हबा करंट अफेयर्स रो क्लास हम करबा सो पॉलिटी रो मु आ गोटे पीवाईक्यू करबी जोटा कि 15 रु 6 तमे नकल भी चलिबो कारण पूरा वन लाइनर क्वेश्चन तो सेटा हम गोटे क्लास रे कर दबा 15 11 6 16 रु करिछे सो 15 11 6 टा हम नेक्स्ट क्लास रे करबा सो दैट पॉलिटी रो 2006 रु 23 जाय जहां भी क्वेश्चन पडिछि सेटा हम कवर कर देले सो जो तीनटा को वीडियो अछि गोटे गोटे आम ऑलरेडी लास्ट क्लास रे करथिले आज गोटे 22 23 रे कले आउ जोटा आम करबा एतिके एटलीस्ट कोन कोन क्वेश्चन पडुची तमे जानि परिबो जे माने तमरो पंचायत राज रो पडुची कि तमरो से जो आम कहले कोडा यूनियन लिस्ट एथ रु सब बेले पडिबो कोडा हमर धर को कॉन्स्टिट्यूशन कोड आनी छी आ जोटा न्यूज रे बे अछि तो सेउडा का तमरो परीक्षा रे पडुची ओके अटॉर्नी जनरल पडुची एडवोकेट जनरल भी पडुची हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोडा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोडा पडुची तापरे आमे देखुचे फंडामेंटल राइट रे को कोडा अमेंडमेंट एक्ट भी पडुची ओके 42nd अमेंडमेंट एक्ट पडीची 44 अमेंडमेंट एक्ट जोडा इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो गोटे दिन आमे करिबा रिवीजन ले पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गुडा गोटे दिन करिबा एंड कोडा इंपोर्टेंट सारंकर क्लास जो हमरो एसएन सारंकर जो क्लास हिची इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूरा बेस्ट रे सर पडीची आ सेही क्लास गुडा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तांकठो ओडिसा रा बेस्ट के पढाई पारे से जो डेप्थ रा जो प्रैक्टिकल नॉलेज रे जो पढाई चंदी से एलएलएम पिला को पढौछन तो गोटे लॉयर कोठो नॉलेज तांकर अधिक तेनु तांकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लास गुडा को नहले ए फ्राइडे सर नेबे क्लास ए फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे तो सर को हमें कहिबा जत्तक इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढीची तापरे सर गोटे क्लास डोंट मिस दैट क्लास ओके सर जो क्लास टा रहिबो तो पूरा डेप्थ रे सारा हमरा पढेबे सर ओके ठीक अछि थैंक यू गाइस सर थैंक यू सर सो ठीक है गवर्नेंस रो क्वेश्चन माने ठीक करैबे गोटे दिन हां गवर्नेंस रे करबा हम ओके पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस रो मु तार 3-4टा क्लास करिके पीवाईक्यू किछि करी ओके थैंक यू ठीक अछि थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर सर